So next form or case is case 4 or standard form 4. In this form, the equation must be given in particular form, and which is equal to z is equal to px plus qy plus function of pq. If the given PD partial differential equation is in this form, then it is called Clairaut's equation. Clear? This is called Clairaut's equation. So case 4 is about Clairaut's equation. If the given PD is Clairaut's equation, then what is the solution? So form must be this, means z is equal to px, this term is fixed, this term is fixed, this term is fixed qy, plus this function may have any terms in terms of p and q. So z is equal to px plus qy, but this function varies with the questions. So this is linear in x and y, and this equation is called Clairaut's equation. And how to solve this? Just if you don't remember the case, this is non-linear first order PDE. Why? This term is first order first degree, this term is first order first degree, but this function of PQ, it is a non-linear term because this is function. So PQ may be in multiplication, P square must be maybe there, PQ square is there. So whatever is there, which this is non-linear. So if it is non-linear, we can solve it through the Charpit method. So how to solve this using Charpit method? Charpit method, what we do, we keep all terms on the one side. So px plus qy plus function of pq, and we are bringing the z term on the right hand side. So minus z is equal to 0. So this is our capital F. Now using Charpit's auxiliary equation, what we get? Dx over minus del f over del p minus del f over del q, dz over something, dp over del f over del x plus p del f over del z, dq over del f over del y plus q del f over del z. Now substituting the values, del f over del p, what is del f over del p? The differentiation of f with respect to p. So it has, this is f, so differentiation of this with respect to p is x, this is 0, and this is f dash, means del f over del p, because this contains both the terms p and q. So differentiation is del f over del p, and this term is also 0 after differentiation with respect to p. So uh, with this term we get x, and with this term we get del f over del p. So x plus fp is del f over del p. Similarly, del f over del q, so differentiating it with respect to q, we get y and del f over del q. So y fq means del f over del q. Similarly, this is del f over del p, this is del f over del q. Again, del f over del x, the differentiation of this equation with respect to x is, it has only single term for x, so differentiation is p. So this is p, and plus p into del f over del z, and again for z we have single term, so what is the differentiation? Minus 1. So minus 1. Similarly for dq, del f over del y is q, q plus del f over del z is minus 1. So what we are getting? dp over p minus p yani 0, dq over q minus q yani 0. So taking the fraction, now if the denominator is 0, so we can take this fraction equal to any of the fractions. So dp over 0 is equal to each fractions, so dp is equal to 0, so we are getting p is equal to a. Similarly dq over 0, so we keep this, we make it equal to any of the fraction, we get dq is equal to 0, q is equal to b. So we have got p and q, so p is equal to a, q is equal to b. Now substituting these values in the given PDE, what we get? Z is equal to px plus qy plus function of fq. So z is equal to ax, p is a, q is b, by plus function of ab. So this is our required solution. Okay, so in Clairaut's form, what the solution is very easy. What you have to do, you have to write the replace p by a and replace q by b. This is the solution. So whenever you are given with Clairaut's equation, the solution is z is equal to ax plus by plus function of ab. This is the complete solution. So how many steps we are skipping?
So this is the benefit, this is the use of using the cases. So cases, so using these cases we can skip some steps. Otherwise, if you don't remember any case, you just solve that equation using Charpit method. Means any non-linear first order PDE using Charpit method. So in Charpit method, what is case 4? If the given equation is in this form, z is equal to px plus qy plus any function of pq, then the solution is z is equal to ax plus qy plus function of ab. So this is our complete solution. Directly we are writing this. Now in whenever you will be asked this question in which is in Clairaut's form, so definitely it is 2 or 3 line answer. Means after 2 or 3 steps or 3 lines, after 2 3 lines we will get our solution. So question, whenever this question is asked in the exam, they will ask you either general solution or singular solution. So how to find general solution, the process, how to find the general solution, the same process. In complete solution, for general solution have we have to get the complete solution, and in complete solution what we do, we replace b by a function of a. So what we get, z is equal to ax plus function of ay, means replacing b by a function of a y plus function of a, and for b we are writing phi of a. So this is that equation. Now what we do, we differentiate it with respect to a. So what is the differentiation? 0 is equal to x phi dash a y plus f dash a phi a. Yeah. So in to find the general solution, what we do, we use the complete solution. In complete solution we write b as function of a, and after replacing this b by phi a, we differentiate that equation with respect to a. Now we, if the elimination is possible, then we eliminate a from these two equations and get the general solution. Otherwise we simply write now eliminate a from these equation to get general solution, means we will get our general solution if the elimination is not possible. But definitely the general solution will be obtained by eliminating a from these two equations. And how to get the singular solution? If z is equal to ax plus by plus function of ab, so differentiate it with respect to a. 0 is equal to x x plus this is differentiation is 0, next del f over del a of ab, and again differentiated with respect to b. So 0 is equal to 0 plus y del f over del b. So what we are doing to find the singular solution from equation a, means what is equation a? The complete solution. So to get the singular solution, we differentiate complete solution with respect to a and with respect to b. Now we have these two equations. Now using these two equations, we have to eliminate a and b, or find the value of a and b in terms of x, y, z, and replacing, substituting those values in the complete solution, we get the general singular solution. But we know that singular solution may exist or may not exist. So if the elimination is possible, eliminate a and b from equations a, b, and c to get one solution, singular solution if exists. So अगर elimination possible है तो हमें वो singular solution मिल जाएगा, otherwise singular solution does not exist. So जब भी आपको इस topic से question होगा, वो generally general solution या singular solution को पूछेंगे, क्योंकि इसका complete solution तो हम 2-3 step में ही बता सकते हैं, 2-3 lines में हमें मिल जाएगा. So what is the question? Find the complete general singular solution of the PDE. So all type of solution we have to get complete general singular solution. So this is the given equation. So we can observe that this equation z is equal to px plus qy
plus p square plus q square. This equation is z is equal to px plus qy plus p square plus q square. So this is in the Clairaut's form, z is equal to px plus qy plus p square plus q square. So form is same, z is equal to, this is function of pq, p square plus q square. So I told you that these three terms are fixed, z, px, qi, and the next last term is function of pq. This may contain any function of p and q. So this is p square plus q square. So given PD is a Clairaut's equation, so its complete solution we know is obtained by putting p is equal to a and q is equal to b. So z is equal to ax plus by plus a square plus b square. So simply substitute uh, p by a and q by b. So we get our complete solution. So now, 1 minute. So the complete solution is very simple. So just replacing p by a, replacing q by b. Now to get a general solution, what we do, we substitute function of a for b in the complete solution. So what is now it became z is equal to ax plus function of a y plus a square plus function of a square. Now we have to differentiate it with respect to a. So 0 is equal to x I dash ay plus what is the differentiation of a square 2a, and what is the differentiation of phi a square 2 phi a and phi dash a. So now we have to, the general solution will be obtained by eliminating a from equation 3 and 4. So this is the general solution procedure. Now how to get singular solution? This is complete solution. We have to differentiate it with respect to a, with respect to b. So these are the differentiations. So out of these equations, we have to get the values of a and b in terms of x, y, z, or eliminate a b from these equations. So what are what we are getting, the value of a is coming out as minus x by 2, and value of b is minus y by 2. So we have eliminated a and b. So substitute these values in complete solution, we get our singular solution. So z is equal to something, writing minus x by 2 for a, minus y by 2 for b. We get our singular solution. So this is solve this. So this is directly, it is not in means by first look it is not looking like in the Clairaut's form, but when we simplify this equation, what we get, keeping this p minus q under 1. So z minus p minus px minus qy is equal to 1 over p minus q. So this is z is equal to px plus qy plus 1 over p minus q. Now this is in the Clairaut's form. This is function of pq. So just writing a for p, b for q, we are getting complete solution. Again, this is directly not in the Clairaut's form. So by taking the square root, this is equal to plus minus of plus minus square root of 1 plus p square plus q square. Now z is equal to px plus qy plus minus square root of 1 plus p square plus q, which is Clairaut's form. So we know how to write the complete solution. Now this question is not in the form of Clairaut's, but we can make it in the Clairaut's form using some particular transformation. How to do this? First simplify this equation, means try to write this equation in the Clairaut's form. Maximum we can what maximum we can convert. So y plus 2zq is equal to q 4xp plus yq. So y plus 2zq, now I have multiplied q in this bracket. So 4x pq plus yq square. Now 2zq, because on the left hand side we have to keep z only, so we are calculating z value from here. So keeping y on the right hand side, so minus y, next divided by 2q, so z is equal to this. Now z is equal to 2px plus yq by 2 minus y over tq. So if we compare this by using the Clairaut's form, what we must have,
Z is equal to px. So p is there, but for x it is 2x, and plus qy. So q is there, but for y it is y by 2, and the next term must be a function of pq only. But here y is here, y is there, so we have to eliminate y by 2. If 1 over q is there, then there is no problem. So to convert it in the Clairaut's form, we must have the equation like this: z is equal to pu plus qv plus function of pq. Why I'm writing this? Because the original equation is z is equal to px plus qy plus function of pq, where p and q are small pq. But here it is not in the Clairaut's form, so we will convert the independent variables, because for x we have 2x, so we have to convert x. For y it is y over 2, so we have to convert y. We don't need to convert z because z is okay here. So z is equal to px. So for x we have 2x, so we will convert x. And for here we must have y term only, so y by 2, so means we have to convert y also. So suppose we are converting x in u and y in v in such a way that this equation converts in this form. Okay, so we have to transform x in u, transform y in v in such a way that it converts the given equation in this form p u, because now we are converting x into u, converting y into v, so the derivatives will also be changed. So where capital P is del z over del u and capital Q is del z over del v. So if we compare this, so what is pu is equal to 2xp. So pu is equal to 2xp and qv is equal to y over 2, y by 2 over q, into q. So qv is equal to y over 2 into q. So solving this, what is capital P? Del z over del u into u 2x, and what is small p? Del z over del x. Now cancelling out del z by del z, so it is coming u over del u and 2x over del x. So keeping dx del x on this side, so because this is x only, so we can write ordinary derivative dx over 2x, and keeping this term on the right hand side, so du over u. And after integration, we know the integration of these terms. This is 1 by 2x, so 1 by 2 log x, and this is 1 by u, that means log u. So log x to the power 1 by 2 is equal to log u. So u is equal to x to the power 1 by 2. So this is the transformation. Similarly for other, del z over del v is into v is equal to y over 2 del z over del y. So del z will be cancelled. What is left? V over del v, y over 2, 1 over del y. Now again, keeping this y term here on the left hand side, so dv over p, and this term over this side, so 2 over y. So this del y will go on this side, so dy, and this y by 2 will go on this side, so means 2 over y. And similarly this del v will go on this side, so dv, and this v will be under the denominator. So after integration, 2 log y is equal to log v, so log y square is equal to log v, v is equal to y square. So this is that transformation which converts the given equation in the Clairaut's form. So u is equal to x to the power 1 by 2 means e to the power square root x, and v is equal to y square is the required transformation. Now, so we have converted the first term in this form, second term in this form. Now this is left, because this must contain only pq terms, but here y by 2 over q. So f of pq is equal to minus y by 2q. The y must not be there, so writing the value of small q is, which is 2qv over y. This from here, this is small q. So what is small q? Qv into 2 over y. So from here we have substituted the value small q. Now what is y square over 4qv, and qv, this y square is v. So writing v for y square and over 4qv, so v would be cancelled, and what is left? Minus 1 over 4q. So this is the function of pq. So now the equation third means this equation.
becomes z is equal to pu plus qv or minus function of pq, and function of pq is minus 1 over 4q. So this is minus 1 over 4q. So this is in the Clairaut's form. So its complete solution is z is equal to au plus vb minus 1 over 4b, writing a for capital P, small b for capital Q. So this is the complete. So now again back substitute the value of u and v because the original variables were x and y. So writing u as square root x and small v as y square. So this is the complete solution. So these are some more question for practice. You practice all the questions. If you get if you find any difficulty, you are not getting solution, you are not getting concept, so we can discuss those problems in the WhatsApp group created. Otherwise you call me, means if the problem is not solved in the group, so we can discuss that problem. So these are I think they are good in numbers. Form 1 question, form 2 questions, and answers are also there, so you can verify your answer. Form 3 question, this is form 4 Clairaut's equation. These are answers. Again the I think these questions are from the Charpit's method. So these are questions for the Charpit's method. Again some questions and with the answers, so you can practice all the question, find out the solution. If you are not getting the solution, ask your colleagues, your classmates, otherwise ask to me. So I repeat the concept or the process. We were solving the non-linear first order PD, एक ऐसी इक्वेशन जो नॉन लीनियर है, फर्स्ट ऑर्डर है, उसको हमको सॉल्व करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसका ऑर्डर 1 है और विच इज नॉन लीनियर. तो इसके लिए हमारे पास मेथड क्या है? द मेथड इज चारपिट मेथड. एक ही मेथड है सॉल्व करने के लिए, चारपिट मेथड. तो अगर आपको कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है तो आप केवल क्या करिए, चारपिट मेथड से उसे सॉल्व करिए. चारपिट मेथड, बाकी सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो चारपिट मेथड से ही डिराइव हुए हैं. उसका यूज केवल ये है कि वो कुछ स्टेप्स आपके कम कर देगा. अदरवाइज अगर आप चारपिट से भी सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन को तो आपको आंसर सेम मिलेगा. तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या है कि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जो इक्वेशन है विच कंटेन्स पी एंड क्यू ओनली, मतलब ना तो यहाँ ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, केवल पी क्यू है, तो उसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम? चारपिट इक्वेशन के ही थ्रू वो ड्राइव होता है कि पी की वैल्यू ए क्यू आता है. तो पी की वैल्यू ए क्यू को हम ऊपर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमें पी और क्यू सॉल्व होके इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड मिलेंगे. इन सारी वैल्यूज को हम डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में सब्स्टिट्यूट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं. ऐसे हमें सोल्यूशन मिलता है. दूसरा फॉर्म क्या था जिसमें x नहीं हो सकता, y नहीं हो सकता, बट z होगा. सो z p q, ये 3 टर्म्स हो सकती हैं. अगर ऐसा इक्वेशन है, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म जब आपको होगा कि फंक्शन ऑफ पी क्यू, तो उस केस में आपको सॉल्यूशन कैसे मिलता है कि आपको पता है कि अगर उसमें z नहीं है, x नहीं है, y नहीं है, तो चारपिट इक्वेशन से ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? p इज इक्वल टू a और q इज इक्वल टू a. सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो गिवन इक्वेशन है उसमें p की जगह a रख देंगे, q की जगह b रख देंगे. दैट इज अवर फाइनल सॉल्यूशन. अगर आपका दूसरा फॉर्म है मींस z p q, स्टैंडर्ड फॉर्म 2 जिसमें आपके z हो सकता है, y हो सकता है, सॉरी z p q 3 वेरिएबल हो सकते हैं, x नहीं होगा, y नहीं होगा. इस टाइप के फॉर्म के लिए हमारे पास सॉल्यूशन मेथड क्या है? मेथड तो वही है चारपिट. वो चारपिट से डिराइव क्या होता है कि आपको p एक रिलेशन मिलेगा, p इज इक्वल टू ए क्यू या q इज इक्वल टू ए पी. दोनों में से किसी भी एक रिलेशन को आप यूज करके और इससे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, वहां से आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी. मींस अगर आप p सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो q की वैल्यू मिलेगी, q सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो p की वैल्यू मिलेगी. तो वहां से आपको p या q मिलेगा, फिर वापस आप p इज इक्वल टू ए क्यू या q इज इक्वल टू ए पी जो भी आपने यूज किया है उसमें रखिए वैल्यू, तो आपके दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू मिलेगी. इन सारे मेथड्स में चारपिट के जितने भी फॉर्म है या चारपिट में हमारा पर्पस क्या है? टू गेट द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन टर्म्स ऑफ x y z, सो दैट हम उसको इंटीग्रेट कर पाए.
dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो दूसरे फॉर्म से हमें क्या होता है, p और p की वैल्यू aq मिलती है या q की वैल्यू ap मिलती है, उसको यूज करके और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमें pq की वैल्यू मिलेंगी इन टर्म्स ऑफ x y z, वो हम वापस dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रखेंगे, उससे हमें सोल्यूशन मिलता है। या फिर एक और ऑल्टरनेटिव है हमारे पास फॉर सेकेंड फॉर्म, कि हम u को हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, u इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई या फिर u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई, दोनों में से कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से सॉल्व हो जाएगा सेपरेशन मेथड से। फिर तीसरा फॉर्म है जिसमें हमारा z नहीं होगा, p, x और y, q चारों वेरिएबल होंगे, और वो भी इस तरीके से होंगे कि वी कैन सेपरेट द टर्म्स ऑफ पी एक्स विद द टर्म्स ऑफ क्यू वाई, एक साइड एक्स पी आ जाएगा, दूसरी साइड वाई क्यू आ जाएंगे, इस तरह से सेपरेशन होगा, z नहीं होगा प्लस सेपरेशन होगा। और सेपरेशन के बाद हमें पता है कि हमें जब हम चारपिट इक्वेशन यूज करेंगे तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड में जो भी पी एक्स वाला फंक्शन है वो किसी ए के इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली जो राइट हैंड साइड में क्यू और वाई का फंक्शन है वो भी किसी ए के इक्वल होगा। तो पहले वाले से हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए एक्स, और दूसरे वाले से हमें क्यू की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ वाई ए। सो ये दोनों वैल्यूज हम डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। और लास्ट फॉर्म है क्लैरोट्स फॉर्म, उसमें हमारा फॉर्म फिक्स है कि आपकी इक्वेशन इस तरीके से होना चाहिए कि z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एनी फंक्शन ऑफ पी क्यू। सो तीन टर्म्स फिक्स हैं, z, पी एक्स, क्यू वाई, जो लास्ट वाला टर्म है वो फंक्शन ऑफ पी क्यू, मतलब वो इन टर्म्स ऑफ पी क्यू कुछ भी हो सकता है। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड क्लैरोट्स फॉर्म, और क्लैरोट्स फॉर्म में जो आंसर होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, वो हमें कैसे मिलेगा, बाय सब्स्टिट्यूटिंग a फॉर p एंड b फॉर q, p की जगह a रखना है, q की जगह b रखना है, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें डायरेक्टली जैसे ही आपको देखिए ये क्लैरोट्स फॉर्म में है, आप p को a से रिप्लेस कर दीजिए, q को b से रिप्लेस कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। जब भी क्लैरोट्स का क्वेश्चन आता है तो वो हमसे जनरल सॉल्यूशन भी पूछते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन भी पूछते हैं, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन हमें 2 स्टेप में मिल जाता है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है कि जब कंप्लीट सॉल्यूशन में हम b की जगह फंक्शन ऑफ a रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a। अब इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, a को एलिमिनेट करना है, तो जो भी इक्वेशन मिलेगी वो हमारा क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन। हमें एलिमिनेशन इजीली नहीं मिलता है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं कि द जनरल सॉल्यूशन विल बी ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग a फ्रॉम दीज इक्वेशन। और सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन को पहले a के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर b के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों इक्वेशन से हमें, दोनों डिफरेंशिएशन से हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है इफ पॉसिबल। ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाए। जब एलिमिनेशन पॉसिबल है, यानी ए और बी की वैल्यू मिल रही है, दैट मीन्स सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो हमें ए की बी की वैल्यू निकालनी है, मीन्स उन दोनों इक्वेशन से ए और बी को एलिमिनेट करना है। उस एलिमिनेशन के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो हमारा क्या होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। So this is all about the non-linear first order PDE, how to solve non-linear first order PDE। पहला टॉपिक तो जो हमारा था सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पीडीई विच इज लीनियर, कॉची लीनियर और सेमी लीनियर। फर्स्ट ऑर्डर था बट डिग्री 1 से ज़्यादा नहीं थी, वो पर्टिकुलर फॉर्म में थी। दूसरा वाला टॉपिक क्या था, सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीई, यानी पीडीई का अभी भी ऑर्डर 1 है बट अब वो नॉन लीनियर है। तो लीनियर के केस में हमारे पास मेथड था लेग्रांजिस मेथड, और नॉन लीनियर के केस में हमारे पास मेथड है चारपिट मेथड। जो चारों फॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 4 या केस 1 2 3 4, वो चारों के चारों चारपिट्स के ही पर्टिकुलर केसेस हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट अवर from the next lecture we will start our next topic, which is solution of homogeneous partial differential equation of higher order with constant coefficient। so अभी तो आप ये प्रैक्टिस करिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक, हमारा थर्ड टॉपिक इस यूनिट का, वो स्टार्ट करेंगे।